Hello everyone, this is Prasad, and I believe if you are watching this video, you want to start your programming journey right now, and congratulations, you have took your first step and got into this video. So if you have watched my previous video related to data engineering, हम ये video भी same format में conduct करेंगे, which will get divided into 3 basic part: what, why, and how. Okay, so we will see from scratch what is programming, what is Python programming. Okay, then we'll see why it is needed, why programming language is needed, and then clear steps or clear roadmap about how to get started with actionable steps. Okay, so clear guidance you will get in this video, so stay tuned. And जब मैंने programming start किया था, I have my 1 or 2 course there which I will show you कि मैंने पहले programs कौन से लिखे थे. Okay, so stay tuned. Okay, so first we will start about what is programming, and I will write a couple of points here. Okay, so मैंने यहाँ पे points लिख दिए हैं. So first we'll see what is programming language. Okay, तो इसको अगर हम divide करें, so there is first is programming and second is language, right? So what is this language in general sense? Okay, तो language बनाई क्यों गई है? So हमें पता है English is a language, Hindi is a language. Okay, तो वो languages बनाई क्यों गई है इतनी सारी? Okay, so when 2 entities, let's say 2 persons, wants to communicate a message to each other, ठीक है? तो they will need a common medium to communicate a message or to communicate a information, right? और ऐसे कुछ standards define किए हैं जिसको हम language बोलते हैं, जिसके medium से हम एक दूसरे को information transfer कर सके या communicate कर सके. Now, if I talk on broader level, वोकेबलरी में वो सारे वर्ड आते हैं जिसका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो गया, मोबाइल इज अ वोकेबलरी. लैपटॉप हो गया, लैपटॉप इज अ वोकेबलरी, राइट? ट्री, एप्पल, ये सारे जो है वो वोकेबलरी है, राइट? सो दीज आर प्री डिफाइंड मीनिंग्स, दीज आर वर्ड्स विच हैज प्री डिफाइंड मीनिंग्स. ओके, दैट्स कॉल्ड अ वोकेबलरी, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स बोलते हैं, जिसका ऑलरेडी कुछ मीनिंग है, राइट? एंड सेकेंड थिंग इज ग्रामर. ग्रामर इज हम सबको पता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, या फिर जो सेंटेंस में फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है? दैट्स अ ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट. सो एवरी लैंग्वेज हैज़ देयर ओन आई वुड से सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर, राइट? तो वोकेबलरी प्लस ग्रामर कंटेन्स द लैंग्वेज. सेम इन प्रोग्रामिंग वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स एंड सम सेट ऑफ कीवर्ड्स विच मेक्स इट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ हम बोलते हैं जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? It's the communication language between a user, which is a human, or maybe a computer as well, right? But mostly human, we as a users, and a computer. ठीक है? So the language which we use to communicate, language will consist of 2 parts: vocabulary and grammar. Okay, between the user and computer is known as programming language. Crystal clear? Now there are some, जैसे कि normal language बहुत सारे होते हैं, French हो गया, English हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है? तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है? सम ऑफ द लैंग्वेजेस, सम ऑफ द एग्जांपल्स हैव गिवन हियर, लाइक पाइथन हो गया, जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है? ये सारे जो है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. दैट मीन्स इट यूज टू कम्युनिकेट टू अ कंप्यूटर, ठीक है? वाया दिस वेरियस लैंग्वेजेस. नाउ हर एक लैंग्वेज के अपने अपने अलग ग्रामर्स है, ठीक है? अलग अलग ग्रामर है, अलग अलग कीवर्ड्स है, अलग सेट ऑफ रूल्स है. ओके, इसलिए हमें सारी सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट इवन इफ वी लर्न वन लैंग्वेज, ठीक है, सो दैट इज सफिशिएंट टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स और राइट अ प्रोग्राम्स. ओके, तो हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक फाइल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके हम जो भी सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं एक फाइल में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम फाइल और सिंपली अ प्रोग्राम, ठीक है? एंड देन वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं. Okay, now we will go to the second part, why programming is needed, right? So बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि why programming is needed, हमें क्यों सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? Why we need to talk to a computer, right? तो I'll just go on a historical data perspective, okay? तो सबसे पहले क्या होता था कि जो हम डेली लाइफ में जो सिग्नल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बहुत पहले ज़माने में इंस्टेड ऑफ सिग्नल्स देयर यूज्ड टू बी सम ह्यूमन्स जो एक्चुअली इंटरसेक्शन पे खड़े रहते थे
एंड दे यूज टू गाइड व्हीकल्स कि किस लेन को छोड़ना है, किस लेन को स्टॉप कराना है, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, राइट। या फिर इफ आई गिव सेकंड एग्जांपल, जो हम स्केच करते थे तो उसके बहुत सारे मीडियम्स होते थे। कुछ लोग क्रेयॉन्स यूज़ करते थे, कुछ लोग वाटर कलर्स यूज़ करते थे, ऑयल पेंटिंग्स यूज़ करते थे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, डेटा हम लिखते थे, ठीक है, वो रजिस्टर्स में लिखते थे मैन्युअली विद द पेन एंड पेपर। तो एक रजिस्टर होता था, वहाँ पे लेट्स से टीचर्स अटेंडेंस सिस्टम, राइट। तो टीचर्स के पास एक बड़ा सा रजिस्टर होता था जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते थे, स्टूडेंट्स के नाम लिखते थे और प्रेजेंट या अब्सेंट उस पर टिक करते थे विद अ फिजिकल पेन एंड पेपर। बट इफ़ यू ऑब्जर्व ओवर द टाइम, सारी चीज़ें जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। व्हाट डू आई मीन बाय डिजिटलाइज? दैट मीन्स अभी हर एक इंटरसेक्शन पे या फिर हर एक चौक पे यू विल नेवर सी अ पुलिसमैन हु इज गाइडिंग द व्हीकल्स। देर आर सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स, राइट, which has some standard meaning. So red matlab stop, yellow matlab be prepared, green matlab go. Okay, so that is the standardization, and this has been digitalized. Okay, so the human need is completely, or human intervention is completely eliminated from that area. Okay, if I give second example of artists, so abhi current generation ke jo most of the artists hai, they are using iPads or tabs to create their art, right? So वहाँ पे ही उनको सारा ऑप्शन मिल जाता है इंस्टेड ऑफ गिविंग फिजिकल पेन एंड पेपर। एवरीबडी स्टार्टेड sketching on the iPads, right? Third example, attendance system. You see lot of example जहाँ पे attendance system via fingerprint हो रही है, या फिर face recognition हो रही है, या फिर simple website के through हो रही है। So instead of maintaining the register, teacher has some website और app जहाँ पे simple click करके, checkbox click करके attendance note हो जाती है, and you'll get all the report. Okay, so what do I mean by that is all the things which have been physical in the previous decade or previous couple of years, वो सारी चीज़ें अभी digitalize हो चुकी है। Now when we say digitalize, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर हैंडल कर रहा है, right? And ये सारी चीज़ें अगर कंप्यूटर हैंडल कर रहा है तो we must learn to communicate with the computer via any programming language. Okay, so that's the importance of programming language. And if you see, there are lots of applications you can do via a programming. You can build a website, you can build a web application, you can create a software, you can automate the things, right? So everything is application of programming language. Every software, every website, whatever you want to build, you must have some fundamental understanding of programming languages, right? Any programming languages. Okay. Now, second thing, why Python? So why I'm biased towards Python, right? So there are a few clear reasons about it. First is Python की community पहले बहुत छोटी थी, right? But it's growing exponentially. Like Python developers, बहुत सारे लोग Python सीख रहे हैं and उसकी community को contribute कर रहे हैं. What do I mean by contributing the community? It means कि बहुत सारे लोग रेडीमेड फंक्शंस बना के पब्लिकली अपलोड कर रहे हैं टू यूज इट फॉर फ्री। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ फंक्शन लिखा, मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अभी दूसरे प्रोग्रामर को अगर सेम फंक्शन यूज करना है तो वो डायरेक्टली यूज कर सकता है। सो इट इज रीयूजेबल, राइट? एंड ऐसे बहुत सारे फंक्शंस एंड जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज। ओके, सो बहुत सारे डेवलपर्स अपने हिसाब से लाइब्रेरीज क्रिएट कर रहे हैं एंड पब्लिकली शेयर कर रहे हैं, विच इज फ्री टू यूज। ओके, मोस्टली लाइब्रेरीज। नाउ सेकंड most important reason is it is easy to learn. Okay, Python programming language has less boilerplate code and simple, जैसे ही इंग्लिश होती है उसी लैंग्वेज में हम, मतलब सिंटैक्स तो होते हैं, ग्रामर तो होता है पाइथन का अलग, बट इट्स वेरी सिमिलर टू इंग्लिश. दैट मीन्स इट इज़ वेरी easy to learn. So that's why the adoption of Python is getting higher and higher year over year. It is a 4th gen programming language. That means it is high level programming language, which obviously means it is easy to learn and easy to write as well. So there is a history of programming languages, right? जैसे ही human evolve हुआ है, right? Decade over decade. वैसे ही programming languages के भी बहुत सारे generations है. तो I will upload generation of programming language video. I'll make a separate video. I will link it here. Okay? So जैसे जैसे generation बढ़ती जाती है वैसे वैसे it is easy to write the code or easy to learn the language, right? And there are 1st gen, 2nd gen, 3rd gen, 4th gen and 5th gen. So there are 5 generations of programming language. 5th is very easy.
Fourth is little bit easy, and Python is fourth generation language. That means it is easy to learn. Now, last important thing is Python is interpreted and not compiled, and that's the biggest reason. One of the reason which Python gets adopted in very high quantity. Okay, so I have mentioned that we can do a lot of applications, or we can develop various interesting softwares via programming language, and that's why we need to learn the programming language. So I'll show you कि जब मैंने programming start किया था, what programs I have written. Okay, so there are two examples. First, it's very funny actually. So first, I have created something called progress bar. जो डाउनलोडिंग के टाइम हमें पुराने ज़माने में दिखता था कि वो डाउनलोड हो रहा है एंड देन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है. सो दैट प्रोग्राम आई हैव रिटन. से दिस इज, सो आई हैव रिक्रिएटेड दिस पाइथन. सो फर्स्ट लैंग्वेज मैंने सीखी थी दैट वाज सी. आई हैव रिटन दिस प्रोग्रामिंग इन सी बट आई हैव रिक्रिएटेड इन पाइथन. सो वो बेसिकली ऐसे जो डाउनलोड वाला ग्राफ होता है ना वैसे बनाया था मैंने एंड प्रोसेस कंप्लीटेड. सो दिस वाज माय फर्स्ट प्रोग्राम. एंड उसके बाद जब मैंने एंड्रॉयड सीखा था तो एंड्रॉयड पे मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन बनाया था जहाँ पे देयर वाज ओनली वन बटन जिसको प्रेस करने से आवाज़ आता था शट अप. ओके, तो जब मैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में था, ठीक है, तो मेरी जो नेबर थी, जो मेरी जो साइड में बैठती थी, तो वो बहुत घटिया से जोक सुनाती थी, राइट. तो उसके लिए मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया था. अगर वो जोक जब भी मैं ओपन ही करके रखता था वो ऐप, ठीक है, वो जब भी जोक सुनाती थी तो आई यूज्ड टू सिंपली प्रेस दैट बटन एंड वो मोबाइल से आवाज़ आता था शट अप करके. सो दैट वाज माय वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट. Now let's talk about the clear roadmap about how you start the programming. Okay, how you start the journey. So that's a simple 4-step formula: watch, read, solve, and repeat. So that's all you need to start the programming journey. Okay, so let's elaborate on each point. So by watch, I mean watch the videos. Okay, so this is the simplest way which I follow personally. Watch videos and tutorials. Okay, watch videos and tutorials. Okay, so कोई भी एक YouTube playlist पकड़ो. Okay, I have my own as well, और जैसे कि other YouTubers as well, which one of which is Sagar Prajapati. I think he has a good content about how to start with programming with Python. ठीक है, तो कोई भी एक playlist पकड़ो and watch one episode at a time. ओके, आपको बस एक एपिसोड देखना है, ठीक है. आफ्टर वॉचिंग दैट एपिसोड यू हैव टू रीड अबाउट दैट कंसेप्ट. Okay, that's a very important point. After watching one episode, do not go for second episode. Watch, read about the same concept. Let's say एक वीडियो में कोई भी let's say variables का concept सिखाया है. Okay, what you have to do is you have to Google that, what are variables in Python. You have to Google that and you have to actually read more about it. Okay, do not watch second video. Okay, read about it. Because वीडियो देखने के बाद most people think कि हमें तो ये पूरा समझ आ गया, ठीक है, बट जब आप रीड करते हो आपको उसमें डेफिनेटली 10 या 20% एक्स्ट्रा समझता है, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, इसमें और क्या फीचर्स है, ये कंसेप्ट थोड़ा डीप में समझता है, ठीक है. सो यू हैव टू रीड इट. नाउ अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं है तो बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं. ओके, रिटन नोट्स. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीड दोस नोट्स एज वेल, जो सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है. तो इन माय वेबसाइट, आई विल गिव द लिंक हियर समवेयर. इन माय वेबसाइट I am selling the notes as well. So if you want to go check it out, you can download that and read those notes as well. It's related to Python. Okay. So second thing is reading. Reading is very important. Okay. Third thing, solve by yourself. Okay. Solve, or I would say write programs. Okay. So third thing is, जो concept आपने read किया है, जिसका आपने video देखा है, you have to solve at least 5 to 10 examples of it. Okay, immediate. Okay, these all are the immediate steps. Okay, so आपको अगर कुछ मतलब बीच में break हो गया तो it will not make any sense as per my understanding. Now there are a lot of platforms available to solve the Python programming language. Okay, one of the best example is HackerRank. Okay, so HackerRank is a website जहाँ पे आप it is free to use, जहाँ पे आप free account create कर सकते हो and you can
डायरेक्टली स्टार्ट, वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एंड यू कैन राइट योर प्रोग्राम्स एज अ आंसर. ठीक है, तो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट हैकर रैंक एज वेल. यू कैन चेक इट इन द कार्ड और समवेयर एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग कोड बाय योरसेल्फ. आपको ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही टाइम में करनी है. एक ही बार कुछ आधा घंटा या फिर 1 घंटा टाइम निकालो और उस आधे घंटे में डिवाइड करो कि 10 मिनट वीडियो देखेंगे, 10 मिनट रीड करेंगे, 10 मिनट सॉल्व करेंगे एंड यू हैव टू रिपीट इट. ओके, एंड देन लास्ट में रिपीट. ओके, सो इफ यू हैव डन one concept very perfect, then go for the next concept and repeat the process. So this is what I followed and this is I still follow if I want to learn a new technology, because in current IT industry, right, you continuously have to be updated. ठीक है, तो आपको continuously कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ती है. ओके, तो वो सीखने के लिए I follow the same process. I watch the videos, I read the content about it, more content about it, and then I do a hands-on or solve the problems by my own. So that's the clear path about how you start your programming journey. And I hope this video would be beneficial for you. And I'll see you in the next video. Thank you.